Very good morning, 6th class. We are doing DG for your geography book, chapter number 8, that is India, climate, vegetation and wildlife, right? इसकी DG को हम कवर कर रहे हैं और वेदर सीजन को हम स्टडी कर रहे हैं. कल हमने जो है कोल्ड वेदर सीजन और हॉट वेदर सीजन के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे मॉनसून के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की DG. The monsoon has started. Now my crops will grow well. देखो ये कुछ क्या है, फार्मर्स है. How did the farmer recognize that देखो ये फार्मर हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं. जैसे ही बारिश आती है तो ये फार्मर क्या कहता है कि अब बारिश होने लगी है, यानी कि मॉनसून आ गया है और अब मेरी फसल अच्छी होगी. ठीक है, तो ये पूछे हाउ डिड द फार्मर रिकॉग्नाइज दैट द मॉनसून हैज स्टार्टेड. फार्मर को कैसे पता चला, कैसे पहचान करी उसने कि अब मॉनसून स्टार्ट हो गया है. डू यू नो व्हेन द मॉनसून स्टार्ट्स, क्या आपको पता है मॉनसून कब स्टार्ट होता है. हाउ इट प्रोसीड, कैसे आगे बढ़ता है. एंड हाउ इट रिट्रेट्स, किस the तरीके से. monsoon had started? Do you know when the monsoon starts, how it proceeds, and how it retreats? This nugget we will learn about the onset and withdrawal of the Indian monsoon. The monsoon winds are pulsating in nature. That is, their course is affected by different atmospheric conditions
while they move over the warm tropical seas. The monsoon starts in early June and lasts till mid-September for about 100 to 120 days. ठीक है, तो मॉनसून कब से कब तक चलता है? जून के स्टार्टिंग से लेके मिड सितंबर तक चलता है. अप्रॉक्स 100 टू 120 डेज का हमारा मॉनसून सीजन रहता है. ठीक है, ये याद रखना है आपको. इंडिया में मॉनसून का टाइमिंग्स क्या होती है? जून से लेके मिड सितंबर तक ऑलमोस्ट 100 से लेके 120 डेज का मॉनसून रहता है. ठीक है. The start of the monsoon is marked by a sudden increase in rainfall, which continues for several days. This is known as the burst of the monsoon. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula, generally by the first week of June. Kerala is widely known as the gateway of the Indian monsoon. गेटवे क्या होता है? जहाँ से मॉनसून एंटर होता है इंडिया में. तो केरला को गेटवे ऑफ मॉनसून कहा जाता है क्योंकि केरला से ही मॉनसून इंडिया में एंटर होता है. As the onset of the monsoon occurs in this state, ending the days of parching heat. ठीक है, जिससे क्या होता है? जो ये बहुत तपती हुई जो गर्मी होती है वो खत्म हो जाती है बारिश आने से. ठीक है, गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है. तो गेटवे ऑफ मॉनसून इन इंडिया केरला को कहा जाता है. बारिश मॉनसून आने के बाद जो है तपती हुई जो गर्मी होती है, क्रॉचिंग हीट होती है, उससे लोगों को राहत मिलती है. On arriving at the Indian peninsula, the monsoon divides into two branches. The Bay of Bengal branch advances rapidly towards the east and passes through Assam during the first week of June. The Arabian Sea branch moves rapidly towards the west and reaches Mumbai on approximately the 10th of June. The Himalayas cause these monsoon branches to deflect towards the west over the Ganga plains. By mid-June, the Arabian Sea branch arrives over the central part of the country. Delhi receives the monsoon showers on approximately the 29th of June. During the first week of July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of northwestern India. The withdrawal or retreat of the monsoon begins in the northwestern states of India by early September. By mid-September, the monsoon retreats completely from the northwestern states of India. By the start of October, it withdraws from Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra. By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. The monsoon withdraws from the southern half of the peninsula rapidly.
तरीके से मॉनसून की शुरुआत होती है और किस तरीके से ये आगे बढ़ता है वो आपको समझ में आया, जो है केरला से स्टार्ट होके और फिर ये आगे जो है प्रोसीड करता है और फिर फाइनली रिट्रीट करता है. Retreats from the rest of the country by early December. The islands receive their first monsoon showers progressively from south to north from the last week of April to the first week of May. The withdrawal takes place progressively from north to south from the first week of December to the first week of January. By this time, the southern part of the country is already under the influence of the winter monsoon. ठीक है, तो ये हो गया आपका विंटर मॉनसून. विंटर मॉनसून आता है यहाँ पे. Here is a map that shows the course of advancing monsoon. देखो, फर्स्ट वीक ऑफ जून यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 5th जून, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून यहाँ से यहाँ तक, 5th जून यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पोर्शन 1 जून. ये देखो, ये सारा टाइमिंग्स ये वाला दिखाया है आपको, 5th जून से 5th जून, 10 जून से यहाँ से लेके यहाँ तक, 15 जून, 29, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, रिट्रीटिंग वाला आ गया ये 15 जुलाई. ठीक है, ये सब क्या है आपका किस तरीके से मॉनसून जो है वो एडवांस हो रहा है वो आपको दिखाया है. ये रिट्रीटिंग मॉनसून हो गया आपका सारा. ठीक है, नवंबर 15 नवंबर, 1 सितंबर, ये अक्टूबर 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, then it's 1st November, 15th November, then 1st to 15th December, right? क्लियर है, मॉनसून समझ में आ गया आपको. अब हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन इंडिया की. Well, it's the festival season all over the world. It's Christmas. Let's go to Mumbai in India. That's Sarah looking at the photographs of Christmas trees. But she seems unhappy. She is wondering why there aren't real Christmas trees around in Mumbai. ठीक है, ये क्यों उदास है? क्योंकि ये सोच रही है कि ये क्रिसमस का टाइम है लेकिन मुंबई में जो रियल क्रिसमस ट्री है वो क्यों नहीं होते हैं. ठीक है, जो ओरिजिनल प्लांट होता है. She requests her mother to help her grow a Christmas tree in the backyard for the next Christmas. वो अपनी मदर को रिक्वेस्ट कर रही Her mother है explains to her कि हम अपने मदर को रिक्वेस्ट कर रही है कि चलो हम अपने बैकयार्ड में जो है एक क्रिसमस का ट्री अगले सीजन के लिए लगाते हैं. हम अभी लगाएंगे तो अगले क्रिसमस तक वो बड़ा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा. लेकिन उसकी मदर उसको एक्सप्लेन करती that है it will probably not be possible. Because first, a young Christmas tree needs a couple of years to be just ready for Christmas. ठीक है, पहली चीज तो वो बताती हैं कि जो क्रिसमस ट्री होता है उसको कुछ साल लगते हैं तैयार होने के लिए. मतलब क्रिसमस के लिए तैयार होने के लिए उसको 1 से 2 साल लग सकते हैं. While for it to become a fully grown tree, it takes many decades. ठीक है, और पूरा पेड़ बनने के लिए उसको कई डेकेड्स लग सकते हैं. ठीक है, कई साल लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा साल लग सकते हैं. तो ठीक है, तो ये कह रही है कि पहली चीज़ तो ये है कि अगले साल तक वो तैयार ही नहीं हो पाएगा और पूरा क्रिसमस ट्री अगर आपको चाहिए तो उसके लिए तो बहुत सारी डेकेड्स लग जाएंगी, बहुत सारे सदियाँ लग जाएंगी, बहुत सारे साल लग जाएंगे. And more importantly, the climatic conditions in Mumbai do not support its growth. दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो मुंबई का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सपोर्ट ही नहीं करता. जैसे हर एक प्लांट को सर्वाइव करने के लिए अपना एनवायरनमेंट चाहिए होता है. ठीक है, अलग अलग तरीके के क्लाइमेट में अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं. तो जो क्रिसमस ट्री है वो मुंबई के क्लाइमेट में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उग ही नहीं सकता है. ठीक है,
Different types of natural vegetation require different types of climatic conditions. Sarah is wondering what natural vegetation means. अब सारा सोच रही है कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है. Let's know more about it. Look at the garden outside Sarah's window. It has various trees with creepers as well as bushes, grass, flowering plant. All the ये जो है इसका सहरा का बैकयार्ड है जहाँ पे बहुत सारे क्रीपर्स के होते हैं, जो बेलें होती हैं, ठीक है, झाड़ियाँ हैं, कुछ फूलों वाले पौधे हैं, कुछ पेड़ हैं, अलग अलग तरीके का जो है यहाँ पे This वेजिटेशन है. did not grow on its own. It was the gardener who planted them and tended them. अब लेकिन ये सारी चीजें जो है अपने आप नहीं उगी हैं, बल्कि गार्डनर इनकी देखभाल करता है, इनको उगाता है, इनकी देखभाल करता है. But when vegetation grows over vast lands without human help or intervention, it is called natural vegetation. Sarah's mother suddenly seems to recollect something. It's about an old school project that Sarah's mother had created about the natural vegetation in India. She had collected pictures of varied types of vegetation, each requiring different climatic conditions. आप हर एक वेजिटेशन को देखो, जो पिक्चर्स दिखा रखी है यहाँ पे, अलग अलग तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन में ये उग सकते हैं, ठीक है. The vegetation in India is of 5 types. ये हमने स्टडी किया था. Tropical 5 टाइप्स की जो है वेजिटेशन होती है इंडिया में. सबसे पहले क्या है देखो, evergreen forests, tropical deciduous forests, thorny bushes, mountain vegetation, and mangrove forests. ये सारे टाइप्स हैं वेजिटेशन के जो इंडिया में पाई जाती है. सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में. Tropical rainforests receive heavy rainfall and are dark and dense since sunshine does not reach the ground. देखो ये कौन से होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा बारिश होती है और बहुत ही डार्क और डेंस, बहुत ही घने होते हैं. डेंस मतलब बहुत ही घने, कि इनमें से सूरज की रोशनी भी पास नहीं हो सकती, इतने घने पेड़ होते हैं इनमें. They always appear green and are also called the evergreen forests. ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल भी कहा जाता है. एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, किनको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को. This is because tropical rainforests shed their leaves at different times of the year. क्योंकि ऐसा क्यों होता है, हमेशा हरे भरे क्यों रहते हैं, क्योंकि सारे पेड़ एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते, अलग अलग पेड़ अलग अलग सीजन में अपने पत्ते गिराते हैं. इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे जंगल के पेड़ जो है एक साथ पत्ते गिरा दे, तो वो हमेशा हरा भरा रहता है. क्योंकि कोई पेड़ जो है किसी टाइम पे गिराता है, कोई पेड़ किसी टाइम पे पत्तियां गिराता है, तो कुछ ना कुछ ग्रीनरी वहां पे रहती है, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. Mahogany, ebony, and rosewood are some trees that grow in tropical rainforests. ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं. In India, Andaman and Nicobar Islands, parts of the northeastern states, parts of West Bengal, and a narrow strip of the western slope of the Western Ghats are home to tropical rainforests. These are the tropical deciduous forest trees. They are less dense and shed their leaves at a particular time of the year. ये उतने घने नहीं होते जितने एवरग्रीन फॉरेस्ट के. ये कम घने होते हैं और एक साल के एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं. The tropical deciduous forests are also called monsoon forests. मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं इनको. Trees like sal, teak, peepal, shishan
and neem are found in these forests. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो जो पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे. In India, the tropical deciduous forests are found in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, and in parts of Maharashtra. ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं deciduous forest. अब thorny bushes देखते हैं. This picture is of a desert region having thorny bushes. Thorny bushes are found in dry regions. Their leaves are in the form of spines to reduce loss of water. ठीक है, ये ज्यादातर जो है सूखे और रेगिस्तान एरिया में पाए जाते हैं और जो है थॉर्नी बुशेस होती हैं, नुकीली कांटेदार जो है इनकी नोक होती है ताकि और जो इनके लीव्स होते हैं पानी को रिटेन करके रखते हैं अपने लीव्स में, स्टेम्स में. Cactus, khair, babul, and kikar are certain types of thorny bushes. Rajasthan, Punjab, Haryana, the eastern slopes of the Western Ghats, and Gujarat are home to thorny bushes. ठीक है, इन जगहों पे थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं, हरियाणा में भी पाई जाती हैं. अब देख लेते हैं माउंटेन वेजिटेशन को. As you see, this is a mountainous region with lots of vegetation, especially cone-shaped trees. The conical trees are called coniferous trees. They are found at heights between 1,500 meters and 2,500 meters. As the height increases, the temperature decreases and the vegetation varies across altitudes. So if Sarah lived in this region, her wish to have her own Christmas tree would be fulfilled. ठीक है, तो सारा अगर किसी पहाड़ी एरिया पे जहाँ पे बर्फ गिरती हो ऐसी जगह पे रहती तो वहाँ पे वो क्रिसमस ट्री को उगा सकती थी क्योंकि क्रिसमस ट्री के लिए सबसे बेस्ट प्लेस जो है वही होता है. Cheer, pine, and deodar are some trees that grow in mountainous regions. In northern India, mountain vegetation is found in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttaranchal. In eastern India, mountain vegetation is found in West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, and Manipur. मैंग्रोव फॉरेस्ट देखते हैं. Look at this dense vegetation in marshy areas. These are the mangrove forests comprising of trees and shrubs. ट्रीज होते हैं, shrubs यानी झाड़ियाँ. Mangroves need a mixture of both fresh water and saline water. ठीक है, मैंग्रोव्स को ग्रो होने के लिए फ्रेश वाटर, ताजे पानी और सलाइन वाटर, खारे पानी की भी जरूरत होती है. But they can survive high degrees of salinity. Mangroves have roots known as breathing roots. इनकी जो जड़ें होती हैं उनको A breathing root is an aerial root that absorbs air and may also support the trees in the soft, muddy water. This is a picture of a mangrove forest. It was actually taken in Mumbai. The Sundarbans in West Bengal are mangrove forests. The Sundarbans are named after the Sundari species of trees found here. ठीक है. Mangrove forests are also found in the Andaman and Nicobar Islands, Gulf of Kutch in Gujarat,
and along many areas along the coastline ये देखो जो रेड एरिया दिख रहा है यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता of है। India. ठीक है, तो जो चीज़ें आपने पढ़ी है आज आपको पता चल गई। अलग अलग तरीके की वेजिटेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस एरिया में होता है, ये इनके फीचर्स हैं। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस के फीचर्स और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। थॉर्नी बुशेस ड्राई रीजन में खैर, कैक्टस, बबूल, लोकेशन इनकी मैप में देखेंगे। माउंटेनियस वेजिटेशन इन एरिया में पाई जाती है। कॉन्फेरियस ट्रीज, पाइन, चीड़, देवदार ये एग्जाम्पल्स हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट है ब्रीदिंग रूट्स कंप्राइजिंग ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स, ये लोकेशन है इनकी। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।